Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well. Hope you are staying safe and you're staying healthy. Uh, कल का सेशन थोड़ा सा aggressive रहा, थोड़ा सा important भी रहा, and I got a lot of people who pinged me offline. अच्छा लगा बातें सुन के. जैसे कि मैंने कहा, of course, this is I think one of the most neutral platforms, and that's how we'll keep it. तो हम इस तरह के और टॉपिक्स, इस तरह की और बातें हम करते रहेंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें पूरा हक है, हमें पूरा राइट्स है टू आस्क क्वेश्चंस टू द अथॉरिटीज, टू एनीबडी हु इज इन पावर, क्योंकि उनको पावर में भी हम ही लाते हैं, तो क्वेश्चन तो हम पूछ ही सकते हैं. सो हेलो 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 एक बार फिर से सबको. हेलो धर्मा जी, हेलो पद्मा, hello Nirmala ji, and Yash, David, and everybody else who will be joining. A very warm welcome. आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करनी भी चाहिए, एंड आई विल डेफिनेटली बी पिकिंग अप ऑल दोस टॉपिक्स without any biases, without any affiliations, without any preference for any particular party, person, or even country. क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है, किसी ना किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, और उस इनजस्टिस के अगेंस्ट अब हम सब खड़े होंगे. इज अ कमिटमेंट दैट वी मेड टू सुशांत, क्योंकि जो सुशांत के साथ हुआ उसके बाद इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट और लोगों के साथ जिनके साथ इनजस्टिस हो, उन लोगों को एक एक आवाज़ मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, और एक जरिया मिले जिसके थ्रू हम लोग टॉपिक्स उठाएं और इन चीज़ों को बाहर लेके आएं. सो ये एक इंसिडेंट है जिसके बारे में ऑब्वियसली आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट, बट एज देयर वर कपल ऑफ थिंग्स हैपनिंग, सो उस वजह से हम लोग इसको उस तरह से पिक नहीं कर पाए, बट देर आए दुरुस्त आए. हेलो 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 सीडर, हेलो एवरीवन, हेलो वीपी, हेलो एवरीवन. ओके. So Lavanya, a 17-year-old girl studying in 11th grade, 11th क्लास में पढ़ती हुई एक 17 साल की बच्ची जिसके साथ ये हुआ, बहुत ही ट्रैजिक कहूँगा, बहुत ही सैड कहूँगा. एंड आई सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स को हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस फॉर व्हाट हैज हैपेंड टू लवन्या. Hello, 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 Pradeep ji. Good to see you. Hello, Yush. Hello, dual individual. Hello, everybody. आकाशवीर जी, नमस्कार, जय हिंद. So मैं थोड़ी देर में मैं लिंक डालूंगा और मैं चाहूंगा आप लोग भी इसके ऊपर बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, और इसके बारे में हमें आवाज़ उठानी भी चाहिए. बहुत लोग उठा रहे हैं, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अपने अपने तरीके से, अपने अपने उन्होंने हैशटैग चला रहे हैं कुछ लोग, इवन ऑन द रोड दे आर स्टैंडिंग, एंड दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट. हमारी कंट्री में जिस तरह की चीज़ें होती हैं बहुत गलत है. अब अगर इसके बारे में बात करें हम पहले सीधा ही, 17 साल की लड़की जो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, उसके साथ इस तरह से होना, कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली उसने पेस्टिसाइड कंज्यूम करके शी कमिटेड सुसाइड. बट उसको क्या ज़रूरत पड़ी पेस्टिसाइड कंज्यूम करने की? व्हाट वाज द रीज़न? कुछ वीडियोस लीक हुए हैं, कोई 3 से 4, और पुलिस ऑफ कोर्स उनको रिकवर कर रही है, रिट्रीव कर रही है. बट उनमें से एक वीडियो में ये पता चलता है कि लवन्या के साथ बहुत कुछ गलत होता था, बहुत सारी चीज़ें गलत होती थी, और ये बहुत देर से चल रहा था. तो लवन्या, जो कि एक हिंदू थे, वो अपने स्कूल में, वो इस सेक्रेड हार्ट स्कूल, एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, और उन्हें कहा जाता था उनकी वार्डन के थ्रू कि आप कन्वर्ट हो, बिकम अ क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन बनेंगी तो यू विल हैव अ बेटर लाइफ एंड एवरीथिंग विल बी गुड. शी डिड नॉट वांट टू कन्वर्ट, ये कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी. जिस वजह से डायरेक्टली तो उन्होंने कुछ नहीं किया, एक्चुअली डायरेक्टली ही मैं तो कहूँगा ये किया. सारे के सारे रूम्स
जितने भी वो बोर्डिंग में उनके सारे रूम्स थे, उनकी क्लीनिंग, इवन द टॉयलेट क्लीनिंग, और उसके अलावा किचन क्लीनिंग, सारा टास्क लवन्या को दिया गया था। एज अ क्या पनिशमेंट कहूं, या एज समथिंग टू गो अगेंस्ट बेसिकली दैट कन्वर्जन। सो क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए मना कर दिया, तो उनको लवन्या को बेसिकली एक तरह से सजा मिली कि आप सारा का सारा जो जो गेस्ट हाउस, जो स्कूल है, वो पूरा आप साफ करेंगी, जो बोर्डिंग स्कूल। नॉट ओनली दैट, शी वाज आल्सो आस्क्ड टू डू एडिशनल चोर्स, जैसे कि अकाउंटिंग। और हालांकि लवन्या को उसमें इट वाज एडेड वर्क, ऑलरेडी ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम उनको ऐड मिल चुका था, उसके अलावा इट वाज एडेड वर्क, जिस वजह से शी यूज्ड टू गेट टायर्ड, नॉट फोकस ऑन हर स्टडीज एंड व्हाट नॉट। सो शी वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। और ये कुछ एक दो 10 दिनों का नहीं था, ये बहुत साल से चल रहा था। एंड इट वाज वेरी वेरी सैड टू सी कि किस एक एक छोटी सी बच्ची, 17 16 17 साल की बच्ची से इतना टॉर्चर उसको किया जा रहा था। और उसी की वजह से उसने ये स्टेप लिया कि शी कंज्यूम्ड पेस्टिसाइड और अपनी जान लेने की कोशिश की। अ, जिस दिन लवन्या ने ये किया, उसके अगले दिन उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल में जब देखा गया, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया लवन्या के, एंड व्हेन द पेरेंट्स केम, दे फेल्ट समथिंग वाज नॉट राइट एंड इट वाज रियली बैड, शी वाज इन बैड शेप। तो उन्होंने अपना उनका उसका हॉस्पिटल भी चेंज करवा दिया, एंड शी वाज मूव टू अ बिगर हॉस्पिटल वेयर शी डाइड। वेरी सैड टू सी कि आज के डेट में, इस डे एंड एज में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की कन्वर्जन के लिए फोर्स होती हैं। बहुत जगह हमने सुना है ऐसी चीज़ें होते हुए, बहुत जगह सिर्फ न्यूज़ में, बहुत कम न्यूज़ में दिखाया जाता है। पर एक एक फीलिंग, एक नोशन चलती है कि हाँ, कन्वर्जन होता है। पर यहाँ जीता जागता एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, जिसकी वजह से अगर कोई मना कर देता है तो उसको अपने हाथ, जान से हाथ धोना पड़ता है। सो 10 जनवरी को व्हेन शी डाइड, उसके बाद से आज हो चुकी है मेरी 27th, इंडिया की 28th। कितना न्यूज़ में आया, कितना इसके बारे में बात हो रही है, बहुत कम। मीडिया कहाँ है? वो मीडिया जो बहुत टॉपिक्स उठाता है, जो क्या बोल कहूँ, वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ, अब ये सब तरह की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, इनके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने पे और उनको स्प्रेड करने के लिए बहुत जाने जाते हैं। अब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू दैट? व्हाई इज दैट नॉट हैपनिंग? सो ये सब चीज़ें देख के बहुत अफसोस होता है कि हमारे मीडिया ने एक बार फिर से हमें डिसअपॉइंट किया। सोशल मीडिया पे, यस, देर आर सर्टन थिंग्स हैपनिंग अराउंड दिस। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, एंड इट इज़ रियली हार्ट वार्मिंग टू सी कि उसके पेरेंट्स, दे आर नॉट गिविंग अप एंड दे बिलीव कि ये गलत हुआ है, एंड दे आर रिक्वेस्टिंग अ सीबीआई इंक्वायरी इनटू दिस। और होनी भी चाहिए, क्यों ना हो इंक्वायरी, because end of the day, a girl child, or let me not even put a girl in front of it, a child has been killed, has been murdered. For what? For following her religion, अपने religion को follow करने के लिए, अपने को अपना stand रखने के लिए, और एक religion ना अपनाने के लिए उसके साथ ये हुआ है। And that is the most worst thing that can happen to anyone in their own country. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बिल्कुल साफ लिखा है कि nobody can be forced to choose a religion or opt out of a religion. Nobody can be forced. तो यहाँ क्या हुआ?
Why was she forced? अभी मैं देख रहा हूँ, मैसेज भी पढ़ूंगा. इन तमिलनाडु when one medical student ने सुसाइड किया था, तब all people raised voice. Even I participated in justice for Anita, but now no one even mentioned once justice for Lavanya. Selective. Exactly. Thank you, Gopal Krishnan ji. Thank you, Dharma. Thank you, everyone. Uh, सुनने में आ रहा है कि बीजेपी प्रेसिडेंट कमेटी बना दिया है लवन्या के केस में. यस, नाउ फाइनली, ये कल की बात है आयुष. A committee has been formed and one political party is taking up this issue. Finally, after what, 20 days? या आफ्टर कितने भी दिन कहें. But what is the government, the state government doing? What is the local police doing? अभी तक सिर्फ इतना सुनने को मिला है कि जो वार्डन थी, सहाय मेरी, शी हैज बीन हेल्ड, शी इज अरेस्टेड राइट नाउ. जो वीडियो है उसके अंदर काफी सारी चीजें निकल के आई हैं, बहुत सारी बातें निकल के आई हैं. बट व्हाई वाज दिस हैपनिंग? और सामने ही हो रहा है, स्कूल के नाम पे, बोर्डिंग स्कूल के नाम पे ये सब चीजें हो रही हैं. कन्वर्जन्स के फोर्स कर रहे हैं बच्चों को. तो अगर बच्चों के साथ ये हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि बड़ों के साथ और क्या क्या होता होगा. कल हमारे सेशन पे कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये कहा, कोई कोई बीमार होता है. एक्चुअली मेरी किसी से ये बात हो रही थी, सॉरी. उन्होंने मुझे बताया कि हाल इतना बुरा है कि कोई गरीब, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मार्केट में कहीं घूम रहा है और वो दिख रहा है कि वो लाइफ है, उसको लालच दिया जाता है कि आपके घर का राशन, आपके आपके बच्चों की पढ़ाई, ये हम कवर करेंगे. यू जस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी. कोई अगर बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में है इस टाइम पे, एंड दे आर अनएबल टू पे देयर मनी, तो उस फीस के लिए उनको कहा जाता है कि आपकी फीस माफ करा देंगे हॉस्पिटल की, आप कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन जाए. What kind of activities are going on and why the government is not able to take action? Exactly, Dheeraj. So that gets me to that point. Is it all because of the state government support? क्योंकि ऐसी कोई चीजें बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के नहीं होती है. तो why is so much of this nonsense happening in certain states? हालांकि there are certain numbers. मैं देख रहा था, I was doing a little bit of research. The total conversion is a little less right now. Less बोले तो कि हर जगह उस numbers को अगर देखें तो it's not that huge. But even one conversion, even one forced conversion, why is it even allowed? Why is it even happening? और अभी लवन्या के केस में एक 19 साल की लड़की के साथ ये हो चुका है, होता होगा औरों के साथ भी. सारे लवन्या जैसे शायद उस तरह की क्या कहें, हिम्मत नहीं होगी ऐसा स्टेप लेने की, तो लोग शायद कन्वर्ट हो जाते होंगे या स्कूल छोड़ देते होंगे. बट ये कब तक चलेगा? हाउ विल lots of films also didn't talk about Lavanya. It's really bad. Lots of media focus on cinema, Big Boss, and cricket. Hello. Conversion of AP has gone down because there are not many left to convert. That could be a reason. That could be the reason कि ये जो सर्वे हो रहे हैं, जो डिटेल्स निकल रही हैं, उसके अंदर बहुत ही कम कन्वर्जन रेट्स दिख रहे हैं. And see a guest, if I know you who you are, and if that's who you are, I would love you to join the session and share the other perspective as well. दूसरा, दो केसेस आज हम बात करेंगे. एक लवन्या का तो है ही है, उसके बारे में, और एंड वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू टू रेज सपोर्ट फॉर लवन्या, क्योंकि इस टाइम पे कहा जा रहा है कि शी डाइड ड्यू टू सुसाइड. पर वो सुसाइड क्यों है? आई वुड कॉल इट अ प्लेन ब्लंट मर्डर, क्योंकि उसको फोर्स किया गया, उसको मजबूर किया गया ये स्टेप लेने के लिए.
कि वो पेस्टिसाइड ले. Exactly. Hello, 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 Pushpaji. Hello, Kamini ji. Lavanya sticking for religion and giving life like Sushant Singh Rajput sticking for his stand. यही तो प्रॉब्लम है कामिनी जी कि ऐसी चीजों के पीछे जान गंवानी पड़ रही है जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारा सच बोलना, उसके लिए अगर ये पनिशमेंट है, सच के लिए खड़ा होना अगर ये पनिशमेंट है, तो शर्म आती है हमें कि ऐसे हम जगह पर रहते हैं या उसके लिए हम प्राउड फील करते हैं. दिस इज रियली रियली सैड टू सी कि इस तरह की चीजें हो रही हैं हमारी कंट्री में. गवर्नमेंट, both state and central, should take strict actions, very strict actions against such people. And this is really very sad to see. दूसरा, एक और चीज जो अभी रिसेंटली हुई, मैं उसको दिखाता हूँ, एंड देन आई एम गोना टेक फ्यू पीपल आई ऑलरेडी सी. आप लोगों ने इस न्यूज के बारे में भी सुना होगा, और नहीं सुना तो अब सुनेंगे. ये एक, लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन. किशन बोलिया, दिस इज अनदर इंडिविजुअल जो अहमदाबाद में एक जगह है, दांदुका तालुका, वहां पर रहते हैं. ही वॉज किल्ड पॉइंट ब्लैंक. ही वॉज किल्ड पॉइंट ब्लैंक. क्यों मारा गया इनको? क्योंकि इन्होंने एक वीडियो शेयर किया था. अगर आपको याद हो, महाराष्ट्र में हुआ था एक, आई थिंक आर्मी, एक्स आर्मी या रिटायर्ड आर्मी या नेवी के ऑफिशियल थे जिनके साथ हुआ था, उनको थप्पड़ मारा गया था फॉर सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज, एक वीडियोस में. यहां पर इस इंसान के साथ इसको तो मार ही दिया. क्यों मारा गया? मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसने क्या शेयर किया था. ये चीज शेयर करने के लिए इसको अपनी लाइफ देनी पड़ी. लेट मी जस्ट प्ले इट फॉर यू. वन सेकेंड, कवर हो गया उसके अंदर. आपके फादर आए हैं. एक बार और प्ले करूंगा क्योंकि वो स्क्रीन कवर हो गई थी, तो लेट मी ट्राई. आपके फादर आए हैं. ये वीडियो प्ले करने के लिए, ये वीडियो शेयर करने के लिए एक छोटी सी, ही हैड टू लूज हिज लाइफ. इसको कहा जा रहा है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ blasphemy, which is you're spreading some kind of hatred for a particular religion or gods. I don't approve of such videos. I don't approve of such things, but इसके लिए किसी को मार देना, how is that justified? This boy lost his life just for sharing this. इसको अरेस्ट भी किया गया था. इसको, इसके ऊपर केस भी हो सकता था और होना भी चाहिए था, for doing something like hurting somebody religious beliefs. बट क्या ये पहला इंसान है जिसने ये किया? कितने ये बॉलीवुड के स्टार्स हैं जिन्होंने हमारे भगवान, किसी भी भगवान को नहीं छोड़ा, हर किसी का मजाक उड़ाया. क्या उनको भी मारा आपने? हिंदू गॉड्स और बाकी भी बहुत सारे भगवानों की बेइज्जतियां होती हैं मूवीज के थ्रू. जेम्स ऑफ बॉलीवुड आप जाके देखें, आपको दिखेगा कि किस तरह से, कब से हमारे सारे भगवानों की बेइज्जतियां करते आए हैं मूवीज के थ्रू. भाईचारा इज अ फेक थ्योरी फेक्ट टू अस. This is what I need. That video, I will put it in TikTok. Massive conversion efforts are
going on in TikTok non-stop. Both religion are targeting India. Bhaichara is a fake theory fed to us. Haven't seen it working anywhere. Not in Pakistan, Bangladesh, and not at all in India. Exactly. तो हमसे ही क्यों उम्मीदें हैं कि भाईचारा रखें? हमसे ही क्यों उम्मीदें हैं कि हम बाकी रिलीजन्स को उसी तरह से रिस्पेक्ट करें? अगर हमारे रिलीजन के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, अगेन आई एम द लास्ट वन टू टॉक अबाउट दिस डिवाइड, बट इस तरह की चीजें होने के बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? व्हाट कैन वन एक्सपेक्ट? हम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे, हम अपने घर वालों को नहीं बचा पा रहे। दिन दहाड़े किसी को गोली मार के मार दिया जाता है। फॉर व्हाट? फॉर अ व्हाट्सएप मैसेज, फॉर अ मीम। कल को यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालते हैं, हम जैसे लोग हमारे को भी टारगेट इस तरह से करेंगे। व्हाट डज दैट इवन मीन? कोई किसी से गलती हुई है तो उसको उसकी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दे, just because they wanted to stand for their religion, just because they wanted to stand for truth, just because they didn't want to झुकना नहीं चाहते थे किसी के आगे for something that they are not supposed to do, तो उसके लिए इनको अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा। 2 lives lost, और ये वो 2 lives हैं जिनके बारे में बहुत कम बात हो रही है। ऐसी तो कितनी लाइव्स होंगी जिनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं होती, हमें पता भी नहीं कितने सारे लोगों को कहाँ कब कैसे खत्म कर दिया जाता होगा, हमें पता भी नहीं। वी आर सो सैड टू सी द स्टेट ऑफ आर, वी आर सो सैड टू सी कि हमारे आज के इस डे एंड एज में इस तरह से हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है। और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वी हैव टू बी टॉलरेंट, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वी हैव टू oversee certain things and overlook all of these issues and move on with life. क्यों? क्यों नहीं कोई लवान्या के लिए खड़ा होगा? क्यों नहीं कोई किशन के लिए खड़ा होगा? किस लिए इन लोगों के साथ ऐसा होता है, इनकी फैमिलीज के साथ ऐसा ये होगा? ये किशन के साथ he was already under so much tension and pressure because of the arrest. उस वजह से ये घर पे थे अपने बहुत दिनों से, एंड ही वाज नॉट इवन गोइंग आउट, क्योंकि शायद उस धर्म में लिखा गया है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो भगवान से रिलेटेड तो आप किसी को भी मार सकते हो। भगवान के नाम पे यू कैन किल एनीवन। ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन सा रिलीजन में ऐसा लिखा है कि फॉर डूइंग समथिंग लाइक दिस यू कैन किल समबडी? पनिशमेंट दें, अगर उसने कुछ गलत किया है उसको सुने समझें, पनिश करें एंड मूव ऑन। अगर ये इस तरह से चलेगा तो फिर तो हर कोई आज के दिन में यही तलवार उठाएगा, बंदूक उठाएगा, एंड दे विल जस्ट finish off everything. I'm going to take some people, and I see NGK talks. Hello, NGK. Hello, Oh, Varun ji. How are you? good. How are you? Long time. Yeah, I'm good. After a long time we'll meet. It's really, Good. Yeah. I'm really happy about you, and because you always talk about the real justice. So what is the going on? The real justice. Who did not talk about the topic? You can pick and the topic you can discuss and you can justice further. I'm really, really very, very proud of you. I'm really happy Thank you, NG because brother. last few days even my channel also I'm talk about the Lavanya issues, justice for Lavanya. So lots of medias did not take care of these issues because Right. uh, because it is not only based on a religion, it is the soul. One girl, the 12th girl was died, so no one care about this because that justice for Lavanya hashtag did not trending. It's not based on a Not at trend all. like that Exactly. Exactly. because no one, even the news channel also, few news channel also, they are talk about this news, and few hours they are remove the news. It was really very very bad and shocking in South India. I'm really very sad about this because last January 9th, that girl was take the poison and she's admitted in the hospital. After Yeah. that, January 19th was she's dead.
So it was really very very bad. The parents was really what I say crying. They are they are also middle class family. That girl was telling, I am really love to study. I love to study. I want to become a good what I'm say doctor or like that. She was what I'm saying. She's telling, but So, finally, and your brother, since you're covering okay, this, I okay, could not understand the video. I'm sure you have okay, seen the video, yes, right? yes. And you understand the language. Can you tell us what exactly she said in that video? Actually, Varunji, what does the happen means that two different type of videos was releasing. Hmm. Before the case, before that that girl was died, one video was released, and yesterday another video was released. The first video was she's telling they are converted to change the religion like that. She's telling like that they are take the video. After that, yesterday was one video was released. She's telling they are giving lots of work to me. They are giving additional work like record note or accounts like Accounting. that. They are Correct. giving additional work because of pressure. Because of that, I'll take the poison like that. She's telling. So different type of two videos was released. It was Right. really confused because the first video is released. After that, I'll talk about my channel. It's really religion based. It was a religion changed. That's why they are telling like that. They are doing like that. I'm talk about that this. But after that, yesterday was the video was released. It's really shocking because some people was the news was it is not truly a religion changed cases. Some what I'm saying some political teams was involved this case like that they are talking. But CBI was surely they are involved this case, and after that only we know the real what is the real thing. Got it. Got it. And yeah, that's the sad part, right? I mean, a 19-year-old girl has been facing this for a long time, and eventually she gave up. I also, I've read some of the and one thing or more, very few newspaper or channels are covering it, so even finding the information is very very tough. Now if somebody has to find, say for example, if somebody from Tamil Nadu itself has to look for information, there are only one or two articles and most of them are in different language. Now for people from the north, or people outside of India, where will they go? What will they do? And nobody is talking. There is one guy, I'm forgetting his name. He's running that hashtag. He went on the street as well. He's picking up play cards and all that stuff. But what can one guy do? Why are people not even talking about this? This is, and since you are maybe closer to this, maybe I should ask you this question. How bad is this situation about this conversion? Is it because of conversion, or is it because of something else? What is the root cause? What is happening? Actually, Arunji, I want to share one thing because before 2 days, me and Isaac Bro discuss about this. I'm telling to Isaac Bro, I want to share this news to Varunji because he's truly is talk about this topic. So I want to share to Varunji. I'll discuss with Isaac Bro. But suddenly today I'm see your YouTube. You can talk about this topic. I'm really happy. I'm really what I'm saying. It's a Right. really give the new strength for me because no what you say no one can talk about this topic even in South India and Tamil Nadu. Lots of YouTube channels, lots of news channels there, but no one did not talk about this because of some religion issues will be came for them. They are affected that channel or like that they are really scared about that. The one part. And another one is it's a truly it's a based on a religion cost. It's a religion changed news. That is not that is also not true because it is two side of the cases will be going on. Okay. That one video was telling truly they are telling yes because of the religion changing I committed suicide like that. That girl was telling. Another videos she's telling they are giving overload work. I need to Correct. study. They are giving overload work even in holidays also they are not allowed to go to my home. They are giving lots of work. That kind of pressure they are giving to clean the bathrooms and lots of rooms. That's Right. why that kind of pressure only I committed suicide. That is the another video. So the two different type of videos will be releasing the yesterday itself. And I heard So there are four videos. I heard there are yes, two more. yes. But which one is the true videos? We don't know We don't because know. uh, what you can say, even lots of new channels did not talk about this. Because of that, we don't know what is the true, what is the real Got things. We it. Got don't it. know Got because it. few videos only I can find. I can collect the news
After that only I'll talk, because even after this incident, after the 3 days, after that only I can talk about this, because I don't know the what is the truth. Because of Right. the if you know the truth, or if you don't know anything about this, means how can you talk? You should I'm not talk. searching. I'm Absolutely. searching. I'm searching. Yeah. Still, I'm searching lots. I can every day. I come searching. I give any news. I'll take any news like that. Even yesterday also, the parents are going and give that what I'm saying, petition for CM and like that, because they want CBI. to involve the CM. Correct. 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 That is the problem is I going on. heard that Varun. also, that they are also trying to get the CBI to investigate this because Yes, they don't have faith or trust on the local police. And and this is, but again, I'm really glad, and GK, that we are doing this, and I will continue to do this. I'm going to ask more people to talk about it. Why only this channel? Why only me? There are many more who are connected with me, and I would encourage them. I would share whatever information we have available, because this needs to go sure, out. bro. This really needs to be spoken about. Yes, yes, And yes, bro. and Even now also I am in office, though I'll see this topic. I'm just at least 10 minutes. I can come and talk about this topic, because it is a really important thing to talk in now situation, correct, because correct. lots of suicide, lots of justice going on. When it will be stopped? Because Exactly. everyone talk about this. Even last 2 months before, justice for Pondarani, one cases Okay. will be going on. Every media was talk about that, like that. But this case, no one talk about. Even justice for Lavanya is not trending. Even I'm searching lots of Twitter pages and Instagram, there is no trending hashtag. Even in actor Kamala Hassan, actress Ranam Shetty, they are also telling why this hashtag was not trending. They are also ashamed. They are also asking why people did not talk about this topic. Right, right, So right. everything, this question marks will be coming on nowadays. No, Why? let's do it even on Twitter. I'm gonna start, and I'll encourage you, everybody. I'm gonna talk to a few more people. Of course, I'm gonna talk to Yash, and let's talk to Krida. Everybody should be talking about it at least one session, and let's see what information is available, and let's bring it out. And then when you have more, or anybody gets more information, I think we should do it more often, and let's spread the word, because Lavanya definitely needs justice. This is so wrong on multiple. I'm just, even though I didn't want to do it, but I'm gonna do it, guys, just to poke you all. आप लोगों को थोड़ा, और मैं हिंदी में भी बात करूंगा, but you all need to be poked. Just imagine the plight of the parents, and I'm gonna put this on the screen for you. A 19-year-old girl killed. Look at the family, which is, I'm going to assume this is the brother who's crying. The family is all broken, and this is what she had to go through just for following her own religion. Or whatever be the reason, whichever will come out later on, she was definitely mistreated, mishandled. Even if she was given extra work, even if she was given extra load of work, why was that done? What was the reason behind it? It cannot be just one girl suffering and getting more work. So there has to be something big, and we look forward to getting this to the CBI, and getting the reality or the truth out. And we really need to fight for justice for Lavanya as well. So thank you, NK brother. Thank you so much, and Thank you, Arunji. we'll I'm continue. leaving now because I'm in office. Sure, sure, sure. So thank you so much, Thank you for and joining. I'll keep support, because you are the really justice person. I'm Yeah, really very very proud of you, thank and you. I'll surely I'll collect some news and forward to you. And thank you so much. Absolutely. Thank you so much. Take care. All right, आयुष, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो कन्वर्जन वाला जो ड्रामा है, ये उन्हीं लोग को टारगेट किया जाता है जो गरीब घर के होते हैं। जैसे दलित हुए, आदिवासी हुए, उन्हीं लोग को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। एक डेटा शेयर करता हूँ आयुष, इसका रीजन क्या है? ये डेटा मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, अभी आई एम स्टिल नॉट 100% डन, आई वुड से। इसका डेटा ये कहता है कि जहां पर थोड़ा सा सोशल मीडिया या इंटरनेट या टीवी, या वो लोग जिनके पास इन चीजों का एक्सेस नहीं है,
पहले ये उन लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि वो सबसे आसान है उनको टारगेट करना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। पैसा कम होता है, सिचुएशन टफ होती है, पढ़ाई बच्चों को करानी है, घर चलाना है, खाना लाना है, बीमारी में अगर कोई है घर में तो उनको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट, और इन सब चीजों को यूज करके उनको पैसे का या इन चीजों का लालच देके उनको कन्वर्ट कराने की कोशिश की जाती है। तो ये एक डेटा पॉइंट था जो मुझे समझ आया कि जिस वजह से आपने जो बोला कि आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों को ही पहले टारगेट किया जाता है। और मेन बात ये है कि उनको झांसा दिया जाता है कि अगर तुमने कन्वर्जन कर लिया तो आपके सब कुछ, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। Yep, सब इनके धकोसले हैं। बिल्कुल। अभी चंद महीने पहले की बात है कि यहाँ पे भी, जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी कन्वर्जन ज्यादा आसमान छुआ था। जबरन उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। ओके। और इन लोगों को सबसे ज्यादा बैकअप पॉलिटिक्स से ज्यादा होता है। मीडिया ऐसे मुद्दों पे नहीं बात करेगी। मीडिया ढूंढती है कि जहाँ भाजपा राज कर रहा है ना, रूल कर रहा है, वहीं टारगेट करो। अब यहाँ गवर्नमेंट दूसरा है, यहाँ भाजपा तो है नहीं, यहाँ है डीएमके, यहाँ नहीं बात करेंगे। अभी यही सेम चीज यहाँ हो जाए यूपी में, तो सुबह से लेकर शाम तक प्राइम टाइम बन जाता है। आपको याद होगा हाथरस वाला कांड 2020 में, सुबह से लेकर शाम तक वो मीडिया का सेंटर बना रहा है। वही सेम राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। याद कीजिए। और दूसरा जो मैंने एक हमने लवन्या की तो डेफिनेटली जो बात करी मुझसे समझाए कि इसमें इतना भी मारने वाला क्या था। मैं एक बार फिर सबके लिए प्ले करूंगा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें ऐसा मारने के लिए क्या था। आपके फादर आए हैं। तो इस वीडियो में क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से उसको मार ही दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपराध कर रहा था इसीलिए उसको रोका गया? क्या कर रहा उसको था? सजा दी गई। अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं यार। उसने ये वीडियो एक शेयर किया व्हाट्सएप पे, और उसके लिए उसके ऊपर पहले तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन केस हुआ और वो अरेस्ट भी हुआ था, जेल भी होके आया। और उसके बाद उसको डर था कि शायद कुछ करे ना लोग, तो काफी दिन तक वो अपने घर में एक तरह से लॉक था, बाहर जाता ही नहीं था। पहली दिन था ये बहुत दिनों बाद, जब वो बाहर निकला था और उसको उसी के गली के कोने के ऊपर गोली मार के मार दिया बाइक पे। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन तो ऑब्वियसली होनी है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट कहा यह जाता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में कहा गया है कि अगर ऐसा भगवान से रिलेटेड किया जाता है कुछ, तो यू हैव द राइट टू किल दैट पर्सन। तो उस वजह से शायद इसको मारा गया। कन्वर्जन का शिकार सिर्फ इंडिया नहीं है, और इंडिया में के अलावा श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है। श्रीलंका में भी यही सेम काम करते हैं, दलितों को टारगेट करते हैं, आदिवासियों को टारगेट करते हैं। अब पाकिस्तान में क्या होता है, मैं आपको 2 नाम बताता हूँ वहाँ के, 2 जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक दानिश कनेरिया, दूसरा मोहम्मद यूसुफ। इनका असली नाम था, दानिश कनेरिया का असली नाम है दिनेश प्रभा शंकर कनेरिया। प्रेशर में आकर के उनका धन बदलवा दिया गया। एक है मोहम्मद यूसुफ, जिसका असली नाम था यूसुफ जोहाना। ये सब वो लोग हैं जो प्रेशर में आकर के अपना रिलीजन चेंज कर दिए, क्योंकि ये सब थ्रेट देने लगते हैं कि अगर आपने रिलीजन नहीं चेंज किया तो हम आपके परिवार को मार देंगे, डराते धमकाते हैं। राइट। हेलो श्रीनिवास। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे है वरुण जी? नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। मैं थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन आई वाज लुकिंग द ऑफलाइन ऑल द वीडियोस। थैंक यू। हाँ जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे इन टॉपिक्स के बारे में?
बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। फर्स्ट सवाल मेरा ये है, और मेरा पॉइंट ये है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इंडिया में हिंदू माइनर है या दूसरे कम्युनिटी माइनर है, जो बार बार माइनॉरिटी कार्ड खेला जाता है कि हम आई डोंट वांट टू मेंशन एनी नेम ऑफ एनी रिलीजन, but what does it mean that we are minors or the other religions are minors? और हम माइनर ना होकर भी माइनर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जो माइनर हैं वो ना होकर भी, मतलब मेजर ना होकर भी, उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर मेजर की तरह हो रहे हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आता। और वरुण जी, हाँ, हाँ बोले प्लीज बोले। कैरी ऑन। ना प्लीज बोले। नहीं वरुण जी, मैंने और एक चीज अभी अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस किया है, ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे बहुत कुछ इनटॉलरेबल चल रहा है। बिल्कुल। यही अगर आप एक अलग रिलीजन के बारे में बोल दें ना, इतना बड़ा मसला होगा, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, ये लोग सोच भी नहीं सकते, वो नहीं बोल पाएंगे, ये उन चीजों के बारे में नहीं बता पाएंगे, उसके लिए इनके इनमें दम नहीं है। हम लोग हर चीज को टॉलरेट करते हैं, इसलिए बोलते जाओ, कुछ भी है बोलते जाओ, ये लोग कुछ बोलने वाले नहीं है। सही बात है, तभी तो हमें कहा जाता है वी आर अ वेरी टॉलरेंट सोसाइटी, क्योंकि हम लोग सब कुछ सह सकते हैं। हमारे थोड़ा बहुत लूट मार तो चलो छोटी बात हो गई, अब तो मार के भी निकल जाए कोई, तब भी हम वी आर स्टिल वेरी टॉलरेंट। बट ये चीज हमको वी नीड टू रिटेलिएट एक पॉइंट आना चाहिए जहाँ पे कि कैसे बोलो, आवर पेशेंस एंड्स, दैट इज द लिमिट फॉर अस, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट, एंड वी शुड नॉट गो अबव दैट, वी शुड नॉट अलाउ एनीवन to interfere, to malign, to I mean I I'm not getting words to say that how we are going to protect। अगर ये हम लोग अभी ये हालत है, तो सोचिए 20-30 साल के बाद क्या हालत होगा। हम लोग को खुले में ये लोग जोक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे हमारा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही कहा। मुझे अब ये भूल रहा है किसने कहा था, हमारे सेशन पे एक दिन आए थे, या तो आरडीएक्स थे या किसी ने ये बात की थी कि अगर हम पुराने टाइम को देखें तो श्री राम से लेके अब आप किसी की भी देख लें, सबके पास अपने लिए कोई ना कोई शस्त्र थे, चाहे वो भाला था, चाहे वो तीर कमान था, चाहे तलवार था, या अगर हम सिख रिलीजन में भी देखें, वहां पर भी तलवार हमेशा होती थी, और बहुत सारी ऐसे चीजें हर हर भगवान के साथ एसोसिएट हुई हैं। तो क्या वो टाइम आ गया है कि अब हमें अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी के लिए भी हमें भी ये सब कुछ करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अपने साथ? क्या हो रहा है ये? और वरुण जी, और एक बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। आई एम इन मस्कट, आई एम इन ओमान, आई आउट ऑफ इंडिया, आई एम इन जीसीसी कंट्री, टू बी मोर स्पेसिफिक इट्स ए मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री। राइट। यहाँ पे आप एक बार उनके खिलाफ बोल के दिखला दो। आप लोग जो यूएस यूके या अदर कंट्रीज में जाके हिंदुइज्म के बारे में बोल रहे हो, ऐसे एक काम करो ना, इधर आओ और मुस्लिमिटी के बारे में एक बार बोल के दिखा दो, आप यहाँ से कैसे सही सलामत निकलोगे, मैं देखूं। यप, बिल्कुल सही कहा आपने, सही, बिल्कुल सही कहा। और ऐसे मजाक आप अपना भी, हम हिंदुइज्म के साथ, सनातन धर्म के साथ अपने खुद का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आप कहाँ से हो, आपके रूट्स कहाँ से हैं? आप भी तो इंडिया से ही हो, और हिंदुइज्म इज इंडिया, राइट। मेजर पार्ट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू हिंदूज। सो दैट मीन्स आपके भी रूट्स कहीं ना कहीं पे जुड़े हैं हिंदुइज्म के साथ, सनातन धर्म के साथ। तो आप अपने खुद का मजाक उड़ा रहे हो उधर, और दूसरों को हंसने दे रहे हो। कल हामिद अंसारी का आप लोगों ने सुना था क्या? उन्होंने बकवासबाजी की अमेरिका में जाके, इंडिया को गाली दे रहे थे। क्या कहते हैं वो? इंडिया को गाली दे रहे थे, ऐसा वैसा बैश वैश कर रहे थे। अच्छा, हाँ, वो मैंने अभी सुना नहीं है, मैंने सिर्फ कुछ देख रहा था कि कुछ अभी आया, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा मेरे व्हाट्सएप पे, पर मैंने सुना या देखा नहीं अभी, तो आई एम गोना सी दैट टुडे, टुनाइट। और मैं और एक बात से बहुत बहुत आई फील प्राउड
कि यहाँ पे भी अगर मैं बताऊं आपको वरुण जी, कि कोई काम है ना, लेट्स से कोई भी काम है, तो इफ दे हैव अ चॉइस to choose in between localites or foreigners, expat workers, they always choose Indians, क्योंकि उनको पता है अगर इंडियन करेगा सही से करेगा और दिमाग लगा के करेगा, दिलो जान से करेगा। फिर ये सिर्फ ऐसे हाँ, हाँ ये सिर्फ वहां के लिए नहीं है श्रीनिवास जी, ये तो आई थिंक इट्स कहते हैं ना प्रोवन फैक्ट वर्ल्ड वाइड। आप सिलिकॉन वैली देख ले, मैं यहाँ सिलिकॉन वैली में बैठा हूँ, ये सिलिकॉन वैली की जी, जो एग्जिस्टेंस है, जो जो बेसिक एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन और एक एक उसके ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पर भी सब मानते हैं। तो इट इज सो ट्रू, बट कुछ कुछ लोग, कुछ सेक्ट्स ऐसे हैं जो लगे हुए हैं हमारे पीछे, पता नहीं किस लिए, किस वजह से, आई फेल टू अंडरस्टैंड। और मुझे यही यही बात समझ नहीं आ रही। हम हर जगह पे पढ़ते हैं कि एवरी सेकंड डॉक्टर एंड एवरी थर्ड इंजीनियर एंड एवरी फोर्थ सॉफ्टवेयर पर्सनल इज एन इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर आप लोग को किस बात पे आई मीन शिकवा शिकायत है? आप लोग को क्यों शिकवा शिकायत है? आप लोग क्या क्या है जो आपका नीचा कर रहा है? कम ऑन, कुछ नहीं करना है, न्यूट्रल श्रीनिवास, बैठ खाना श्रीनिवास, नहीं। नेटवर्क, Srinivas, we can't hear you. Your network is choppy. सॉरी, Yeah, Srinivas, we can't hear you. It is very, very choppy right now. Okay, while we wait for Srinivas, hello Anubhav, welcome. Hi Varun, Hey, how are how you are you? guys? Good, good. Yeah. क्या कहना चाहोगे यार इस Uh, इन चीजों पे? yeah, I mean, like, there is so much politics going on, even US में, like you're mentioning, right? यहाँ पे भी अभी recently जैसे एक केस हुआ है यहाँ पे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे कास्ट सिस्टम लगा दिया है, एंड आई थिंक देर आर लॉट ऑफ सेलेक्टिव कैंपेन्स विच आर टारगेटिंग इंडियंस। और अभी तो ये छोटा है, जैसे लाइक इससे आई थिंक 5 years 6 years बैक ये लोग इसराइलीज को टारगेट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द रिलीजन। अब यहाँ पे ये धीरे धीरे इंडियंस को भी सेलेक्टिवली काफ़ी टारगेट करने लग गए हैं। आई थिंक यू माइट हैव हर्ड अबाउट ये हामिद अंसारी का वो जो कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट? अभी हाँ, मैं कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना कि वहां पर और भी लोग थे, और अभी किसी ने ट्वीट एक शेयर किया कि पहले कहा जा रहा था स्वरा भास्कर वाज आल्सो देयर, नाउ शी इज क्लैरिफाइंग शी वाज नॉट देयर। सो मैंने अभी सुना नहीं है कि वहां पर क्या बात क्या की गई है और कहा गया, बट आयुष वाज मेंशनिंग कि ही This guy इवन has ब्रॉट only one topic. He only talks about intolerance बढ़ गया है and all that. मतलब जहाँ भी जाता है, he has only one topic to talk about. ये intolerance is too much. So there is no way. मतलब India is safe for everyone. So America should intervene, put sanctions on India. तो वो यही मतलब एक उसने टॉपिक उठा लिया है, और मतलब he doesn't show the other side of the story. I mean, I'm not saying कि problems are not there. Problems हैं, लेकिन वो सब जगह है. इट्स नॉट जस्ट वन साइड, राइट? तो अभी जैसे लावण्या इज वन केस, जो गुजरात में अभी एक और केस हुआ है, तो उसके भी लाइक दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, दे जस्ट वांट टू सप्रेस द अदर न्यूज़, एंड बस एक साइड का जैसे एक दो न्यूज़ होता है वो इसको खाली ये लोग खूब ज़्यादा फैलाते हैं, एंड देन दे विल स्टार्ट सेइंग कि बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस है, मेजॉरिटी इज डूइंग बीइंग इंटॉलरेंट अगेंस्ट माइनॉरिटी, एंड आई मीन yeah, to like I sorry didn't join, matlab did you show the video वो गुजरात वाला? yes, yes, I did. Okay, cool. तो हाँ, तो वही है, मतलब I mean I don't know how to really push it. हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, but it's the media which is controlling everything, Correct. and Lutyens media का power is the driving force. तो जिसकी तरफ Lutyens media है, they can control the narrative, and that's Right. the problem. So एग्जैक्टली यहाँ पर जो लोग पूछ रहे हैं कि हु इज दिस अंसारी, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद हामिद या हमीद अंसारी, हु इज द एक्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नवीना जी, ही वाज द एक्स वाइस वीपी ऑफ आवर कंट्री। इनको उस टाइम पे भी बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी बात करी थी अपने ही कंट्री के बारे में, जब ये पावर में थे कहो, या ये जब लाइमलाइट में थे, और अब जब से ये थोड़ा ऑफ लाइमलाइट हुए हैं,
तो इनका थोड़ा ज़्यादा दिखने लग गया है, अग्रेशन टुवर्ड्स आवर ओन कंट्री। तो मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि इनको बनाया कैसे गया था और क्यों बनाया गया था, बट for the rest of his life, he will still be known as the ex vice president of our country. बट और दूसरा, जहां आपने ये बात करी, राइट, आई मीन किशन की, ये जो एक इंसिडेंट हुआ है जहां दिन दहाड़े गोली मार के उसको मार ही दिया गया फॉर फॉर शेयरिंग अ वीडियो। और वो क्लिप भी क्या है, मतलब अगर अगर ऐसा होने लग गया तो फिर तो स्टैंड अप वाले तो सबको एक एक करके ये मार ही देंगे। मूवी स्टार्स वहां से शुरू क्यों नहीं करते ये लोग? सिंपल सी बात, जो मूवीज में इतना मजाक उड़ाया जाता है रिलीजन का और भगवानों का और सबका, तो क्यों नहीं करते वहां से शुरू करें? यहाँ एक कॉमन मैन की क्या वैल्यू है? और व्हाट अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट्स, व्हाट अबाउट दोज गवर्नमेंट्स, स्टेट्स, सेंट्रल, सारे, व्हाई आर दे नॉट टेकिंग दिस इनटू कॉग्निसेंस एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट दीज एक्टिविटीज? और ये तो वो हैं जो समहाउ न्यूज में आ जाते हैं, ये केसेस हजारों केस होते होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, उनका क्या? Absolutely, yeah. क्योंकि a lot of people are getting impacted, मैं अभी जैसे वो एनके आया था, he was talking about it, I have spoken to some of the people from down south. I have spoken from different other parts of India as well, जहां पर ये conversion का तो obviously चल ही रहा है, but they are so scared, they are even so scared to even talk about it. Nobody wants to talk about it. तो किस लिए? और यहाँ पर वरुण कह जी, रहे हैं मैं यहाँ पे एक पॉइंट, एक सॉरी मैं आपको इंटरवीन हाँ कर रहा बोलो हूँ, बोलो प्लीज। यहाँ पे श्योर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। ये श्योर कन्वर्शन मेनली प्रॉब्लमेटिक है उन जगहों पर जो कि अनटचेबल जगह हैं। I was born and brought up in an area which is specialized in forest. I mean, we stayed among tribes. Okay, और मैंने अपने कॉलेज डेज में देखा है कि उन अनटच्ड ट्राइब्स को, उन इनोसेंट पीपल्स को कन्वर्ट किया जाता था, showing them that you are going to get money, you are going to get education, you are going to get medical facilities. ये सब चीजों चीजों को दिखा के उनको, आई मीन, कन्वर्ट किया जाता था और उनको मैनिपुलेट किया जाता था, विच इज रॉन्ग। या आई मीन, मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि विच इज इलीगल। राइट वहां वहां पे आके, आई मीन, इट बिकम्स अ वेरी इंटेंस फैक्टर। राइट और यहाँ पर ये जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस दैट हैपेंड, अ जूम मीटिंग, जहाँ पर कुछ लोग गए थे, ऑन द, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन द 20th को, 20th ऑफ जनवरी को हुआ था। और वहां पर ये कुछ और लोग भी थे, बट स्वरा भास्कर का भी मेरे को किसी ने ट्वीट फॉरवर्ड किया था, दिखाया था कि स्क्रीनशॉट, जिसमें वो लिख रही है कि जस्ट टू क्लैरिफाई, आई वाज नॉट इवन देयर। तो वो थी कि ना नहीं थी, इट रियली डजंट, इट वाज अ जूम मीटिंग, नवीना, इट वाज, ही डिडंट कम टू यूएस, इट वाज अ जूम मीटिंग जहां पर और भी बहुत सारे थे। सो लेट मी सी इफ आई कैन शो यू, मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, तो मैं, आई थिंक मेरे पास वो फ्लायर भी है, बट सो दैट्स द सैड पार्ट कि हमारी कंट्री के खुद के जो एक्स लीडर्स या करंट लीडर्स भी, एक्स की क्या बात करूं मैं, इवन द, ओके सो दिस वाज द वन, नहीं ये वाला नहीं था, एक और किसी ने फॉरवर्ड किया था, हेट इज स्टेट प्रोजेक्ट, ये एक्चुअली जनवरी 29th को होने वाला है। तो ये एक और हो रहा है जहां पर Saba Naqvi is organizing and she's the host. And then there are Noor Mavesh, आरजे साम्या और बहुत सारे ऐसे लोगों को इकट्ठा करके अब इसके ऊपर भी बात होने वाली है, हेट इज अ स्टेट प्रोजेक्ट। तो अब वो एक और एंटी हिंदू है या को कौन सा केस बनेगा, उसके अंदर किस चीज के बारे में वो बात करेंगे, आई स्टिल हैव टू काइंड ऑफ डिग डीप इनटू इट, बट ये सब चीजें बहुत प्रेवलेंट है अब आज की डेट में, एंड इट्स हैपनिंग ओपनली राइट नाउ। अब इन लोगों को वो डर ही नहीं रहा कि इस तरह से हम करेंगे तो क्या होगा, दे आर नॉट इवन स्केयर्ड टू डू दैट। बट थैंक यू यश,
and this man has been exposed every time all pro park people are traitors sitting inside. Exactly, this is the biggest problem. कि हमारे खुद के लोग घर में बैठ के, वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ तो आ, अपने ही घर में बैठ के अपने ही घर में चोरियां कर रहे हैं, अपने ही घर के लोगों को मार रहे हैं। तो हम दुश्मनों को तो क्या क्या कहें जब अपने ही घर के लोग ही इस तरह से दगाबाज निकल रहे हैं। सो वेरी 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 शेमफुल। और इनमें से एग्जैक्टली यस, ये वाला अजीम प्रेम जी का स्पॉन्सर्ड है, यू नो, द सेम at all. Anshul Saxena, exactly. This was the name. Anshul Saxena is the one who did. Let me see if I can bring his video. And feel free, you know, Srinivas and all, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, but let me just show everyone. Anshul Saxena has been talking about Lavanya for the last 2 to 3 days. Let me just share my screen and show you. अकेला भी है बट वो बंदा लगा पड़ा है. Let me just bring this up. उसको चेक किया जाए और लवनिया के लिए आवाज हमें उठाती रहना है. स्कूल है और वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है. गवर्नमेंट उस स्कूल को फंड देती है. तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल्स में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं. हमारी सरकार से मांग होनी चाहिए कि ऐसे स्कूल्स में ऑडिट कराई जाए, ऐसे स्कूल्स को चेक किया जाए और लवनिया के लिए आवाज हमें उठाती रहना है. हमें लवनिया के लिए जस्टिस, उसके जस्टिस के लिए हमें आवाज लगातार उठाते रहना है. जस्टिस फॉर लवनिया स्कूल है. ये जगह जगह जाके इन्होंने इस तरह से आवाज उठाई है लवन्या के लिए. हैट्स ऑफ टू दिस मैन. इन्होंने ट्रेंड चलाने की कल कोशिश की थी, नेशन विद लवन्या. समहाउ आई मिस्ड इट. कल का था ये 11 बजे का. वेयर इज एवरीबडी वाज आस्क्ड टू डू दिस. कन्वर्जन के नाम पे जो हो रहा है, एंड ही हैज बीन गोइंग ऑल अराउंड कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए. दिस मैन हैज बीन गोइंग एंड पुटिंग अप दीज बैनर्स जगह जगह पे. और यहाँ लिखा हुआ है, द मिशनरी स्कूल इन विच लवन्या यूज्ड टू स्टडी is a government aided school. All government aided schools should be checked and audited. Feedback from the students should be taken. Transparency is a must. इन्होंने 23rd से, you know, I think शुरू हो गए थे, and तब से ये लगे हुए हैं. For the last few days he has been raising voice for Lavanya and he has been taking it all by himself. So guys, yeah, please go ahead. कोई कुछ कहना चाहता है? ये इस पे कोई बड़ा सेलिब्रिटी अब कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कठुआ में जो हुआ था उस पे प्लेक कार्ड लेकर सब खड़े हो गए थे. इस पे किसी बड़े सेलिब्रिटी का रिएक्शन तक नहीं आया. Yeah, right. वरुण जी, अगर आपको, आई मीन द वीडियो विच आई हैव सीन अबाउट लावण्या, हर लास्ट वीडियो, यकीन करें मैं तमिल समझता हूँ. दुबई तमिलन ब्रो इधर हैं, वणकम ब्रो. मैं तमिल समझता हूँ. आई मीन इंस्टेंटली माय ब्लड वाज बॉइलिंग. वो जैसे बोल रही थी, सामने वाला जो जो सवाल कर रहा था, वो जिस तरह से बोल रही थी वो बच्ची, यकीन करें, I mean, I was feeling like my blood was pumping on in my brain. I mean, वो उसका लिटरल ट्रांसलेशन अगर मिल जाए ना, मैं सच बोल रहा हूँ, हम में से कितनों का, I mean, कितने अपने आपा खो बैठेंगे मुझे नहीं पता है. Yeah. इतना, I mean, पैथेटिक वर्डिंग्स थे वो. शेमफुल था हम लोगों के ऊपर वो वर्डिंग्स. एक हिंदू मेजोरिटी में एक बच्ची, ओके, अगर वो कोई एडल्ट होती, कुछ होती, ओके, नो प्रॉब्लम. एक बच्ची के साथ ये सब होता रहा और किसी ने वहां पे आवाज तक नहीं दी. और हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं, जय हिंद जय भारत के नारे लगाते हैं. यार क्या है ये इसका, आई मीन, आई हैव नो वर्ड्स टू.
नहीं, बिल्कुल सही कहा। श्रीनिवास, वही मैंने कहा, लैंग्वेज तो नहीं मुझे पता, बट जितना मैं समझ पाया, जितना उसको लोगों ने कन्वर्ट करके मुझे बताया, उसके हिसाब से तो वी रियरली, गिरिजा जी, ओ या आई टोटली फॉरगॉट। मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा गिरिजा जी। आई वुड लव कि अगर आप लेट मी एक्चुअली डू दैट, एंड लेट मी फाइंड दैट वीडियो। बट अभी प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी है। प्रिया, तब तक आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, एंड आई विल ट्राई टू प्ले दैट वीडियो। हाय वरुण, हेलो गुड हेलो, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये बहुत ही गंदी वाली प्रॉब्लम है ये। और जैसे वो एक वेस्ट गांधी, राहुल गांधी जो है, उसे हिंदुत्व कहने से खुद को डर लगता है, बट उसे एट द सेम टाइम वही गवर्नमेंट हमारे पंजाब में फोर्थ सबसे बड़ी चर्च बना रही है। तो ये वर्जन कोई वो एज ए नॉर्मलाइज कर रही है। ये मतलब क्या कह सकते हैं अब इसके बारे में। आज वो क्या नाम है, लवन्य हुई है, कल को मैं ही हो जाऊंगी। प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट कि नहीं जी, मैं तो खुद कहती कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बट ये जो है क्या ही कह सकते हैं इनके बारे में। इनको खुद को क्रिश्चियन कहने में शर्म नहीं आती। बूटलीगिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बूटलीगिंग करने में शर्म नहीं आती, बट हाँ खुद को हिंदुस्तानी कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती है, क्योंकि ही इज द सेम मैन जो मतलब खुद का क्या है यही नहीं पता उसको। मतलब ये एक तरह से अगर ये पॉलिटिक्स मतलब लॉ, इस पर कोई स्ट्रॉन्ग लॉ निकाल दिया जाए ना कि एंटी कन्वर्जन लॉ, तो कुछ हो सकता है। थैंक यू। या लॉस को तो ऑब्वियसली अभी पूरे सिस्टम को चेंज करना तो, हाँ जी प्लीज बोले। वरुण जी, आई वाज शॉक्ड कि पंजाब में ये सब चल रहा है यार। और कोई स्टेट को मैं एग्री कर लूं, लेकिन पंजाब और पंजाब चर्च में और कन्वर्टिंग, चवन्नी है वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। और ये जो सिद्धू है, ये तो चलो है पंजाबी है, जाट है, बट ये जो चन्नी है, ये क्रिश्चियन है। और क्या है ये वो जो कन्वर्ट करवाते हैं उनमें प्रोग्राम्स में जाता है। चंडीगढ़ में इस अंशु सक्सेना, इसने कंप्लेंट की थी कि ये करवा रहा था कि ऐसा प्रोग्राम कि मतलब वही जो वो यशु यशु मेरा यशु, तब इसके उनके कहने पे रोका था। और मतलब क्या ही बोले यार, फोर्थ सबसे बड़ी जो चर्च है वो यहाँ पे बन रही है। ये बंद करना होगा बहुत ज्यादा, इसके लिए ऊपर लॉ निकालने हो चाहिए और इसको चर्च बंद करना चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए ये वीडियो प्ले करूंगा क्योंकि गिरिजा जी हैं यहाँ पर, श्रीनिवास, यश, देयर आर मेनी तमिलियंस एज वेल। तो आप लोग एक बार फिर सुने और उसके बाद लेट्स सी, लेट मी जस्ट प्ले इट। யாரு கேட்டது? பேரு ராக்கேல் மைக்கேல் மேரியா? ராக்கேல் மேரி. வேற என்ன சொன்னாங்க? யார்கிட்ட கேட்டாங்க? எப்ப கேட்டாங்க? அப்ப மாறாதனால உனக்கு தொந்தரவு. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல மதம். ओके, तो इफ यू गाइस कैन मे बी ट्रांसलेट थोड़ा सा इसके बारे में। श्रीनिवास। हाँ वरुण जी, शी इज सेइंग दैट 2 साल पहले मेरे मम्मी पापा को वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे 2 साल पहले से ही
इसका और भी डिटेल्ड वीडियो एक है, ये तो जस्ट एक पीस है, कट पीस है, जिसमें वो बोल रही थी वो बच्ची कि मुझे सारे काम करने बोला जा रहा था, ऐसे करके मैंने कहीं वो एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। Okay. I hope Girija ji, if she is here and if she can join, or Yash bro, if he can. Yeah, I think मेरे को लेट मी फाइंड कि अगर वो पूरा वीडियो मिलता है, और अगर आपके पास है, अगर आप प्ले करना चाहते हैं या करना, तो ओके, आई थिंक दिस वन इज द वन. No, not this one. நான் வந்து மெக்கல்பட்டியில் 8th-லேருந்து 12th வரைக்கும் படிக்கிறேன். எப்போவுமே நான் தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுப்பேன். ஆனால் இந்த வருஷம் எப்போவுமே சொன்னேன்னா ஸ்கூலுக்கு என்னால் போக முடியல. லேட்டாக தான் போனேன். அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே என்னை வந்து போர்டிங் சிஸ்டர் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து கணக்கு. Maybe you can read it. ये जो लिखा हुआ राइट साइड पे. मैं नहीं पढ़, मुझे पढ़ना नहीं आता, खाली बोलना समझना आता है. गिरिजा जी, यश ब्रो को पता होगा पढ़ना. Okay, so Girija ji, yeah, Yash, if you can join, we would love to have this translated. मैं link एक बार फिर डाल देता हूँ, so that either of you can join and kind of interpret it. And it's okay अगर आप कैमरा नहीं भी ऑन करोगे, if you are, that's fine. But तो ये पूरा वीडियो I'm gonna put it, you can read. Perfect. So गिरिजा जी can read it. So गिरिजा जी पढ़ के या तो आप बताएं, ताकि obviously मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो कई लोगों को तो नहीं समझ आएगा. Okay, while she's reading it, we'll wait for that. But यही इसी चीज के लिए हमने इस टॉपिक को भी हम we will continue. और जैसे अभी यश ने बोला है, he was, I can understand, people are busy, people are doing a lot of things, and मैंने भी बहुत ऐसे टॉपिक्स, बहुत ऐसे इश्यूज, बहुत ऐसी चीजों को छोड़ा था. Okay, गिरिजा जी is here. Perfect. Hello, नमस्कार गिरिजा जी. नमस्कार गिरिजा जी. नमस्ते जी. हाँ जी, थोड़ा लैग आ रहा लगता है गिरिजा जी के पास, बट इफ यू could just read it, or do you want me to play it, गिरिजा जी? However you want. I can read this. Okay. What she says, I used to go a little late, and then they would all there used to be a sister in the boarding school, and she would ask me to look into all the accounts. She would ask me to write the accounts. That's what is written on this slide. Okay. Okay. Let me just play it. Yes. பார்க்க சொல்லுவாங்க. இல்லஸ்ட்டு நான் லேட்டாக தான் வந்தேன், இப்போ ஒன்றும் புரியல, அப்புறமா எழுதி தரேன்னு சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டாங்க. Even if she tells that, okay, please wait, I have some other work to do, school work and all, they will not listen. They'll make me do the work. You have to first finish this, and then only you can do rest of the things. And they'll keep on giving me some writing work. That's what this one says. பரவாயில்ல, எழுதி கொடுத்து சொல்லி ஒரு கணக்கு. Even if I write correctly, they'll keep on making me correct, and they'll say, no, some fault is there, and they ask me to do the same thing again and again, and I couldn't concentrate. I used to be always first in school, but now I couldn't concentrate, and I started getting low marks. Yeah. I think this is the other game that they've started Mental playing. torture. Yeah. So I realized that I cannot, continue to study like this, because they are torturing me and I'm not able to do well in my studies. So I drank poison. Yeah.
So somebody is asking her, "What is your name?" And the girl, and then she asks also, "What is the sister's name?" The girl who has taken the poison says, "Sakai Mary." It's the name of the sister. What is the name of the father? Father lam illa. I means I don't have any father, but actually he was asking about the school headmaster, who's called as the father. So he asks again, "What is the school headmaster's name?" Mhm. It's there only. It is. Okay. I think. Uh, I think you should go back. Something is missing. Okay. Yeah, a little behind. Yes. Yes. Where did they ask you to do anything else other than this work? Did they ask you to do anything else other than writing accounts? That's what he's asking. Now, next, she says the next slide, what you put will come. She says they used to, lock the gate. They used to ask me to lock the gate. What other work did you do? The man is asking again. Before I have to before when people get up, I have to open the gates. I have to put motor for pumping water. Then after everybody eats, I had to if all the motor is correct and all that, I've got to check, and all the work that warden has to do, he asked me to do. All of them were taking the salary and asked this girl to do. Thus, I think, yeah. What is his name? What is the name of the warden? So she doesn't answer that. She says, if I ask, you have to learn to be responsible. That is why I'm making you do all this work. That's what he used to tell me. Uh, did they ever say that you should not go to school and study? The girl says, no, they didn't say anything like that. She's so very truthful, not blaming. Uh, did you come here for Pongal? That is Makar Sankranti. So again, she's not answering that. If I ask for anything, he says, no, no, you have to be here, you have to study, so you have to be here only, you cannot go. So they will not let me go to my home for Makar Sankranti or any festival. They'll make me stay in the hostel. Huh. So did you not come for Makar Sankranti? So this time, they said that my health is not good and they sent me. How did they come to know that you've taken poison? She says, no, they don't know. Okay, he says. That's it. They don't know, she says. Okay. If you feel like committing suicide, This is then like contact this number. That this. is what now it is the government's number they have given Got it. Got at it. the end of it. Yeah. So the girl has literally gone through so much torture. Yeah. Right? A girl who has been studying so well and focused in life. In the beginning, she was saying she wanted to do medicine. Before you, that short video where you put, she said, I wanted to do medicine. I was very hardworking and I always used to stand first in the school. Now, these people made her do everything and do very poorly in academics. That must have affected her self esteem like anything. Exactly. Yeah. Right. And that was, I think, the idea, right? To kind of demotivate her, to break her down so that Exactly. she could convert. Yeah. No, the thing is, in other religions, what happens is either in the church or in the mosque, whatever collections come because of donations, they remain with the religious body, which is controlling the temple or the mosque, where church or the mosque. But for temple, the money is all taken over by the government. So now what happens? The trust does not get any money to deal with the social issues. Say, for example, in a village, there are pandits. Okay, the pandits who work in the temple, they hardly get anything. Whatever people put on the plate, and their salary is very less, around 300 to 400 rupees only.
and so they manage. They go through very tough times. So if their children have to study, there is no because they are Brahmins, there is no reduction in the fees or anything. They are supposed to be forward community, so they don't get any concession for anything. So then where will they go? So this is how these people, when somebody falls ill, somebody gets cancer, when people are very frantic, it is at this time these people will say, okay, I'll give you money, your religion is not helping you, you convert. That's how they say that. Right. So that is why now many temples are asking for it, like in Shirdi or Siddhivinayak temple in Maharashtra. They have somehow managed to at least retain a percentage of it, and they do so much social work. We asked them, because as Rotarian, we asked them, just 3 months back, I had asked for some person who had taken COVID injection, steroids. Because of that, his legs had become completely weak. So I had written to Shirdi temple and this temple. They both agreed to help him, and they helped him to get the treatment done. So they do that. But they should have the money, na? Nobody lets them have the money. That's the problem. Right. Yeah. Okay. Let me answer some questions, and So then in many ways, Hindus are being oppressed from all sides. Correct. That is the issue. Navina ji, great questions, and these are like, summarizing, what we've talked about. But did the police close the case? No, the police has not closed the case, but they're trying to suppress it. They're trying to, put it under the radar that maybe because the girl was not performing well, उस वजह से, क्योंकि, और मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा कि just because she was not performing well, she committed suicide is what their theory seems to be. और हिंदी में भी मैं यही बोलूंगा कि दिखाया ये जा रहा है या कोशिश ये हो रही है इस केस को खत्म करने Why के लिए. did she not perform well? They are not looking at it. She's saying that so clearly. Yeah. तो हिंदी में जैसे मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये कहा केस बनाने की डायरेक्शन जा रही है कि शायद ये लड़की पढ़ नहीं रही थी अच्छा, इसके ग्रेड्स गिर रहे थे, ये परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिस वजह से इसने सुसाइड कर लिया, जैसे एक थ्योरी बनाई जाती है. Now the other question you put in, was a police case filed? Yes, there is. Parents ने यहाँ तक किया है कि they are trying to get the CBI involved in this so that a thorough investigation could happen around this case. So CBI case होगा कि नहीं, and they are reaching out to the chief minister. Eventually, I think they will reach out to, other agencies as well. But they are trying their level best case को ऐसे खत्म ना किया जाए. नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन कन्वर्ट होना एक फैशन बन चुका है. चेक मैसेज. ओके. सो प्लीज गो अहेड. आयुष, आप बहुत देर से कुछ कहना चाहते थे. ये मैंने एक वीडियो का लिंक भेजा है, आप देखिए जरा. अच्छा, ये उसके माँ की अभी क्या गया स्टेट बोर्ड चाणक्य. ओके ओके. अगेन आई वुड नीड गिरिजा जी, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आ रहा. तो लेट मी Lavanya death, religious conversion. Okay, I'll play it. Let's see. I think I'll have to pause and play this क्योंकि ये तो वीडियो है. Yeah, no problem. You can play the whole video, and at the end I can say that. துன்புறுத்திட்டாங்க ரொம்பவே. பொண்ணுக்கு மனசு காயப்பட்டு இறந்துருச்சு. எங்க பொண்ணுக்கு நியாயம் வேணும், நீதி வேணும். அந்த 2 பேத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணா மட்டும்தான் எதுவுமே நாங்க பாடி வாங்குவோம். எங்க பொண்ணே போயிடுச்சு. நாங்க என்ன பண்ண போறோம்? இந்த மாதிரி எங்க பொண்ணுக்கு நடந்தது வேற பொண்ணுக்கு யாருக்குமே எங்கேயுமே நடக்க கூடாது. எங்க பொண்ணாதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், லாஸ்ட்டுமா இருக்கணும். எங்க பொண்ணுக்கு நடந்த மாதிரி வேற எந்த பொண்ணுக்கும் இந்த அநியாயம் நடக்க கூடாது. இந்த தமிழ்நாட்டுல, இந்த இந்தியாவுல நடக்கவே கூடாது. இதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நடவடிக்கை எடுங்க. இல்ல மதமாற்றம் எத்தனை வருஷமா மதமாற்றம் ஏற்படுத்தி எத்தனை வருஷமா? 2 வருஷமா 2 வருஷமா இல்ல 2 வருஷமா பண்ணாங்கறீங்க. அப்பலாம் வெளியிடாம இப்ப வெளியிறது எனக்கு காய்ச்சல் பண்ணி துன்புறுத்தி இறந்துடுச்சு. இந்த பொண்ணு அவங்கள்ட்ட வந்து இந்த மதமாற்றத்துக்கு அது நீங்க எப்படி கேட்டிருக்கீங்களா? பேர் வந்து ராக்லின் மேரி
சகாயம் மாரி அவங்க 2 பேத்தையும் கைது பண்ணணும். இல்ல நான் கேக்குறதுமா, உங்களை 2 வருஷமா சொன்னாங்க நீங்க போய் ஸ்கூல்ல போய் கேட்டீங்களா ஏங்க மதம் மாறதுன்னு வருது? என்கிட்ட தானே கேக்குறாங்க, என்கிட்டயும் கேக்குறாங்கல்ல. என்கிட்ட கேட்டாங்க. என்ன சொன்னீங்க? ஏன்னா எனக்கு அவங்களுக்கு சத்தமா போயிடுச்சு. பாப்பா அந்த வருஷம் 10th முடிக்கிறா. கொரோனா லீவுங்கிறதுனால நாங்க டிசியை வாங்கி அடுத்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கணும், சரி ஸ்கூல் ஓபன் பண்ணாதான் சேர்க்கணுங்கிற அஜாக்கிரதையில இருந்துட்டோம். திரும்ப ஸ்கூல் பொங்கல்லாம் முடிஞ்சு ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் டிசிக்கு போய் ஸ்கூல்ல சேர்க்கலாமான்னு எடுத்துக்க முடியாது. எங்களால முடியாத கண்டிஷனுக்கு பாப்பா படிக்கணுமேங்கிற ஃபர்ஸ்ட் மார்க் ஸ்கூல்ல 489 மார்க், அந்த பொண்ணுக்கே இந்த நிலைமைனா 200 மார்க் எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன நிலைமை? பொய்யான தகவல் போலீஸ் சொல்ல எங்க பாப்பா பேசுன வீடியோ இருக்குது, இதை வச்சு இது எப்படி பொய்யான தகவல் ஆகும்? Oh God, mother is like a lioness. Yeah. She says for the last 2 years, my daughter was pressurized to becoming, to change her religion. And she was asked to clean bathrooms and other things and making accounts, doing all that. She was feeling very hurt because she was not able to study. We wanted to change the school and then the holidays came. So we thought, okay, we will go to school. We were trying to ask them, and they said, they asked me also to convert. They told the mother also to convert. So then we decided that is when I realized that they are not going to change, but they are going to continue to trouble my daughter. So then I told her, come here for the vacation, we look for a different school. And in the meantime, all this happened. So this man is asking, if they have been troubling you for 2 years, why did you not come out until now? So she said, she wanted to complete her studies. We wanted her to somehow finish her 10th standard. We are struggling for it. And now that she has died, I'm coming out. And you're telling me, why are you coming now? Whatever has happened to my daughter should not happen to any other child in Tamil Nadu or in India. So that is why I'm here. So she says, how come those 2 people are not arrested? My daughter has given her this thing statement, and you won't believe that. She's asking that journalist, giving him back nicely and saying that until we get justice, we will not take her body. We will not accept her body. We have lost her anyway. What are we going to do with her body? God, wow, that's really a lioness mother. Yes, Srinivas. Before I take Shashi ji bole, please go ahead. यहाँ पे मैं एक बात एक्सप्रेस करना चाहूंगा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन. मैंने कहीं पे सुना कि बॉलीवुड फेटर्निटी दे आर अप्रोचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट to help them financially because of corona. They have made a huge loss and they are struggling. I would like to request our esteemed central government, instead of helping Bollywood, why not we help these poor people whom we are considering as below poverty line and bring them to a certain streamline where they don't struggle for at least food or the basic requirements of life. Yeah. And second point, most important point here I would like to express is, or put in front of you all is, we need to remove this caste system. This caste system, due to this caste system, at that particular time, Sir B.R. Ambedkar, he made it to improve the lower caste people. Now the situation has totally been changed. It has been reversed. Now the upper class people are suffering, and lower caste people, they are enjoying some benefits. Even they don't need it. I'd like to say something here. It is not that all lower class people are doing well. There are people who are still suffering. So I would say that change it and say that economic disparity. Look at people with this less than this income, they should get this. That's it. Period. Don't look at whichever caste they are. So he can be a Brahmin, or he can be somebody who is sweeping. Whatever it is, whatever they are doing, what is the economic condition? Look at their ration card. Look at their living conditions. Like in certain colleges where I've been working, we used to go to the house. We had certain this thing written down. So do they have these things? If they don't have these things, then they're literally struggling for life. Then we will give them. Right? Yeah, regardless of any caste.
let Exactly. us We will consider not the bother. economic. It could be sometimes Muslim, it will be sometimes a Gujarati, or it could be a Tamilian. We won't care. But the child is deserving because the child is working hard, right? And then when you go to their house, you find that they are living under leaking roof. Okay, they don't have piped water. They have to go from get it outside. They don't have an attached bathroom. There may be a TV, but then people will say TV nahi hai kya? TV to something they can buy from outside. 2000 rupees ko bhi three. If I throw my TV, sometimes I may give it free to my maid. नहीं Right? गिरजा That मैम doesn't. मैं But buying a house is I different. So we used to no have this I criteria, and looking at the economic. Just let me complete this, then I will wait. Looking at the economic condition of the people, we used to give them. So we should no not look at the caste difference. We should not look at that. We should look at only this. yeah, what I'm saying, Girja ji, that when they are setting the benchmark, that Yes. these things are to be considered when you are saying whether the person is poor or not. You should not, like you cannot say if he has a cycle, he has a fan in Exactly. his house, he has Yeah. a TV in his house. Come on. Exactly. So not these things. Their everyday living condition, where do they live, what kind of locality in which they live, what is their regular income, what kind of food are they able to eat. These are the things that we need to see, because that is what is going to sustain them. This is somebody, if I'm going to, that's what I said, a TV or a cycle or such things, people may just give because that is some one time thing. But every day, how are they going to live? Do they have proper electricity? Is it like in one room 6 people are living? These things we should look at. Yeah. All right. I'll let Shashiji speak as well. He's been waiting for a while, and then I'll take Yash. Hello, Yash and Shashiji. Namaskar and welcome both of you. Jai Hind, Jai Bharat, Varun here. I was listening as usual with a keen eye ear. So thanks to Srinivas Bhai and to Girija ji also. See, my question is, okay, now whatever that the school has done to Lavanya, after that, how many people will convert to Christianity, looking at the way they have treated Lavanya? So are they really thinking that, okay, yeah, there will be thousands of more people who will embrace Christianity, looking at the way they behave? I really don't get what is the point in converting to Christianity at the point of a weapon or whatever, right? That is one thing. And secondly, I think they are only insulting their own God or Jesus Christ by forcing people to convert. Because he means if Christ wanted everybody to be Christians, what would have stopped him at that time only? You could have just made everyone Christians just by means whatever. Because he was a truly a saint. He could have done that within maybe a matter of seconds. But he chose only 12 apostles. Why? Why didn't he make the entire world as Christians at that point of time? Because only those 12 deserve to be Christians. So why should whoever are following Christ try to prove themselves bigger than Christ by trying to force people into Christianity? What is the point actually? Are they trying to equal him or are they trying to become greater than him? If he wants, even today, he can convert everybody into a Christian, but he's not doing that. He's making people to be born in either means I don't take Christ was just a Christian. I take him as a son of God. God is one only. If he wants, he can. Means he's still so many people are there who follow different faiths and all that. But ultimately, everybody is going up to that one God only. So he's not really cared whether he's a Christian or a Muslim or a Hindu. So I really don't understand why whoever claimed to be following him try to be as powerful as Christ only. That is what I would be very harsh on them. Don't please try to equal him. He is the son of God, and if you really want to be, not everybody can be sons of God. He was chosen to be one because he undertook so many penances and all that in whatever way to come close to God. When he was being crucified, he was blessing his own enemies, not the way trying to convert people into their own religion and killing them as such. So that is what Christ is all about. But where are we? In Bible, it is clearly written that okay, he prayed to the Lord to forgive his enemies. Whoever was doing that to him, also he was doing that. If he wanted, he could have performed some miracle and he could have escaped that death. Also, he could have chosen to live till today. But why are they? Means why did he not do that? He didn't choose to go against the laws of nature, against the laws of God, and whoever had to be taken by him, those were the marked sheep that the Lord wanted him to get,
and he did his job, right? So similarly, you do your job. If you are inspirational enough, and if people think that okay, yes, Christianity is a better religion for me, let them come out of their own choice. I really don't understand this point about trying to force somebody. So yeah, I don't know. And what Girijaji said about that lady means so painful. She doesn't want to take back the body of her daughter. Yes. Imagine now to what level they would have felt frustrated at So much pain. just looking at her. So Yes, much such. pain and anguish. Absolutely. Yeah. Absolutely. So see, in Hindu culture, yeah, body is considered to be, getting moksha only after cremation as well. But they don't want to do that. Why? So have they really become so inspirational for embracing Christianity now? I don't think so. No, the They people should who are think twice. doing the perpetrators of crime, they don't think about that I have to be good, then people will really, like Hitler, when he never thought that I have to be good, then people have to follow me. At that point of time, they are cruel because that is what they can think about. They don't think about people loving them, caring. They don't care if people respect them, love them, or care for them. They have to simply follow my instructions. That is all their thought. So I say something, how dare she defy that? That is how sometimes, they may not be forcing it on everybody, but I told her to convert and she is after all poor. How dare she defy that? So it is more of arrogance. It is like when an atrocity is committed on a woman, we say it is not because of lust, it is because of power, the desire to show that I have power. That is why people do it. Similarly, the same way, this is more of arrogance, more of power, more of pride, ego than anything else. It is not really love for religion that make people do it. Girija ma'am, now tell me one question. If Jesus Christ in those days, if he wanted the king to bow down before him, could anything have stopped that? No, but He, that is a he could question have. that you and I ask because you really believe that he was divine and he could have done that. But if they believe like that, then they will know that even today also he can do the miracles. But they don't believe that. They are not real followers. That is the thing. Absolutely, ma'am. Yeah, Absolutely, they are not absolutely. real followers. They are not real believers. If they believe, then like we say, whenever whatever happens, what we say, still Sushant is there, and Mahadev will make it do for him. Divine justice will happen. So our faith is so unshakable. That is why Yes. we don't want to do anything wrong. We don't want to say anything wrong. We don't want to adopt any wrong means because we always believe that ends do not justify the means. We have to True. follow the correct method to get the correct results, right? And we Absolutely. believe that God is there with us, but that faith is not there. That is why they're doing all this. Yeah, yeah. They think they Yeah, can try to do things rather than allowing God to do that. So absolutely. The kingdom of God is not by the numbers. It is by the true. by the purity of heart that it spreads, Very right? much, very much. Absolutely. Very well said. Very well said. That's all I have to say, Ronan. Thanks. Thank you, Thank you. Varun. Thank you, Thank Giraji. you, Shashi. And Thank you. thanks Thank to you. all Thank of you. you. All right. Bye. Yash, please go ahead. First of all, very good morning to everyone. And Varun bro, I'm really proud that you have taken this topic. I think very less in the north have spoken about this in Hindi or in English. In fact, in Tamil itself, very less people have spoken about this. But I have one thing. I should say one thing before I start to speak. I'm sorry that I did not speak about this because I was a little bit busy for the past 2 3 days. But after seeing Varun Bro's message, and I got 3 4 videos related to this. My thing is, how long is this going to happen in India? How many girls we are losing? Whether it comes religion, whether it comes this, whether it comes that. We might speak for the next 3 days, 4 days. I'm just saying the general guys. Here, bro, they are not speaking what is important. They are speaking what the content is given. Now, if I would have seen this update, or I mean this news 3 days back, I'd have surely spoken. But a lot of YouTubers here, they are scared to speak about this. Why? Religion is involved. You don't need to just blame the religion. You speak out for her. You ask justice for her. Just when you started the video, in that few minutes, I gathered so much of information. But there are some people saying, before you speak, research. I will do that.
Yeah. I'm already proud that you are voicing out for this. Girijamma is here, Srinivasa is here, everyone is here. But my thing is, how long? By how long? Today, now see, we kept Sushant's movement strong. Today, Sushant movement is not faded and is going on strong because of all of us. You all are keeping it strong. Now see, Lavanya's issue, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, then something will happen, that message, that entire issue will be vanished. And Yes, here that the is why media, it is said, it exactly, is the Grijamma. silence of the good can do more damage. Silence of good people, when something wrong goes on, can do more damage than the evil words of the bad people or the Exactly. evil action of the bad people. Because True, Amma. what is the point in being good if you don't exercise that power of speaking at the right time and saying the right things? So if you always say, "Oh, what is going to change because I speak?" Nothing is going to change, maybe, but you are changing the energy in the environment. Every thought, every word is changing the energy around. So you may not see the change, but somewhere somebody's mind is changing, and that will ultimately bring about the change. True. So you may not have the power. Sometimes, even at home, also, we may think, okay, I cannot change a person, but why do I say that? It doesn't matter. The person may not immediately change, but the environment changes. When you're talking, the person to whom you're talking may not change, but the other people who are around may get influenced, and they may feel, at least I should not do it. Right? And at least our own conscience, did I do the right thing? What is my use of being alive if I see something happening right in front of me and I behave as though I'm not alive? My soul is dead if I'm not doing anything there. Right? So at least raise your voice. If somebody is hitting somebody, you may not have the strength to physically attack that person if you're bedridden, but at least you will be screaming from the bed, right? You will not just keep quiet. Even if you're bedridden, you will be screaming from the bed, so and so is doing this. So we are worse than that, just sitting and watching, having all this machinery. Everybody is saying that none of the news channels are also covering it. That is so sad. Girijamma and Varun bro and everyone, I was like shocked to see our Tamil Nadu media channels. They were not even speaking about this. Today, I had to make a video regarding the lockdown, which is released here in Tamil Nadu, which is actually, it's a fear for me. Because here, these guys are in Lala Island. They think no one is bothered about the rules unless it affects them. So I'm trying to spread this. For example, Varun bro, when I was in Dubai talking about Chitra, here people are saying, "Macha, don't come here. This will happen to you. That will happen to you." So far, when I voice out for any topic, I know my rules and regulations since I'm in Dubai. But when I came here, people started to see me. I know this guy. He speaks for Chitra. He speaks for Sushant. And this is the thing. This is the thing. People, when they voice out, they think they're going to voice out A to Z, defame somebody. It's not that. It's something which, I mean, like how Varun bro has been voicing out. Girijamma is with us from the day one. Lot of topics we are voicing out. But there are people who are taking this into advantage just for this views, TRP. Now this top YouTubers, they are busy with the content which has been given to them. But if the same Lavanya's content in Tamil Nadu goes high, they will immediately speak. Yep. They will immediately speak because they know this trending. So they will go, they'll on the camera, you know what, guys, justice for Lavanya. That is just for the video. What are you doing after this? Are you continuing speaking? You see any YouTuber here who's watching up for so many things, or even for Chitra, one video for 1 month. Just to pop up and say, hey guys, I'm here. I'm watching out. That's it. After that, he'll go different thing. That is what I'm saying. Now see what happened in Punjab, what happened in Gujarat, what happened in Hyderabad. So many girls are affected. We don't know whether they got justice right now or not. When this topic comes, you're speaking, but really, I am so happy. I never knew that you will talk about this, or because I didn't know about this. Today, GK is messaging me. Then my friend Unni is messaging me. You have to speak about this, but make sure you get the right information. I said already, Varun bro is speaking. I'm happy about that. Yeah. None of the YouTubers in India, whether it's Malayalam, Telugu, anyone, no one is speaking. They don't care. When the girl's mother is speaking, you feel that, your goosebumps. Yeah, so but much when of someone speaks, courage and absolutely true, ma. When something happens in Hyderabad, something happens in Punjab, we Tamilans are speaking. I don't know about we Tamilans. I am speaking to my Tamilans. This is what we have to. We have to think everything equally and go for it.
Honestly, hats off to you. Hats off to your this thing, Varun bro. Really, and I will surely get the right information. And Right. I don't know what religion. I don't know what they're trying to say. There's no religion when a human has left this world. What will happen? The soul is will have when you go to heaven. Will you have you are Hindu, you're Muslim, you're Christian? You go left, you go right, you go straight. No. Now Girjama, you know what they're trying to do? This topic they will try to make it into religion fight. We are not fighting for the religion. We are fighting for that girl. Absolutely. For her Victim card. Exactly. This It is the is thing. not. It is not even about whether it is the girl or a boy. Even if a boy had been tortured like this, still would have felt the same pain. Okay, if a young boy was tortured like this, it would have been the same pain. Is it going to be different because it's a girl? No. But the thing is, you don't have the freedom to choose the way you want to. Religion is as private as something that you eat. It is your choice, right? And you are born into a particular culture. You begin to like that, and you feel comfortable living in that. Simple. Yeah. And why should somebody force you to do that? It is like somebody saying you have to eat this food. It is just like that, right? What it becomes a part of your the texture of your being, religion, because it is not just uh, a minute when you go and pray in front of the god. It is an everyday thought and belief system, right? If maybe somebody will take a examination paper and start with om, and somebody will write ram, so people will have different ways of doing. Somebody draws a cross. So these are all things which are become a habit, and they don't even you don't even consciously think, right? When you take food, you might just pour water around it and offer to god. Anything you make, you will do that. Sometimes you are not even thinking about it, but that is an automatic thing. You take the food down, next is you'll pour water in your hand and you'll do it. So many things are like that. We don't consciously do it. How can we change all those things? True. Well said. But one thing is for sure, Varun bro. For sure, I mean, this thing we have to. I mean, get it. It should stop in India. Basically, it's not only Tamil Nadu. It's all over the place. See, Varun bro, I always say this in my channel in Tamil. Because this issue came out in media, we know this. Imagine how many people, children, kids, girls, boys in the village. You think we know this? How this second, how many people are murdered? Do we know? No, unless he is a celebrity, Yeah, unless he's someone. the girl somehow mustered that strength to speak at that time. Imagine. It is like that girl Nirbhaya. In Yeah, spite of whatever she went through, she narrated what happened. She could speak. And luckily, she had a boyfriend who was alive who could speak, who could also narrate many things. But whereas this girl, in this condition, also, she somehow managed to narrate everything. And in spite of that, who will lie at deathbed? Even then, they're questioning, why are you talking about it now? There, he's saying, that journalist felt like if he was in front of me, I would just give him a tight slap. It was so bad, so insensitive to ask a mother who has lost a child, why are you talking about it now? How much rage she must be having to talk about it now. True. True that. All right. So Yash, I mean, I also have shared whatever I had. Very little information is available. Only the video around the family, which we just played, and also the video of the girl. There are 4 videos, but right now they're trying to suppress these videos. They're trying to cover it up, and show it more like, the girl was not studying properly, and that's why she took her life. But that doesn't seem to be the real reason. So yeah, let's spread it more. I'm gonna ask other YouTubers as well who are always standing, for the facts, for truth. And we don't have to, you brought up another point, and let me just touch upon that as well. A lot of people are constantly pinging, and they want to know, about what's my take, or some of our take around this BBC thing that has come out. So to be very honest, I don't want to, without going into the details, without going into the technicalities, guys. The only point is, while I completely abolish is the right word from my side, abolish Bollywood, some of the things that have been done, and I blame myself as well. I would say, it all started with
with this platform, with this channel itself, that yes, I was also part of that conspiracy. I was also part of that fakery of news and all the nonsense that started through initially in the Sushant Singh Rajput movement. But thanks to all that nonsense that happened in the initial days, I could differentiate and I could clarify what were facts versus what was all fake narrative and fake news. And since then we've moved on. ये platform वहां से बहुत आगे निकल गया है, and we're not going to go back to those gauges. But at the same time, yes, the fact remains the same, that yes, there are certain channels, there are people, there are platforms, there are, even on Twitter we see so many people doing so much nonsense, spreading hatred, spreading false news, and that will continue, because end of the day, they have to get the views, they have to get the subscribers or whatever you want to call it. So from my perspective, while I watching that particular documentary by BBC, I personally felt, and I've also tweeted about it, but I personally felt they've done a very, very shoddy job. They have nothing, no concrete stuff that they're talking about. Certain things which I agree with, certain things I don't agree with, but at the same time, I was looking more into, okay, maybe they'll be talking with some facts, and they also did the same thing, that they're questioning others about. They're also, वो कहते हैं ना, हवा में तीर मार रहे हैं, and that's what they've done. So I don't really, I'm not a big fan, and now I'm not even I don't even want to even talk about BBC at all, because what they've done is they've just created some kind of hysteria to get more views themselves, and that's pretty much it. So they got their views, they got what they wanted to do, for the time being. But end of the day, it's not even worth talking. Is all I can say about that particular stuff. But at this point of, Varun, yes, sorry, I'll take leave. I have an sure, early sure, morning meeting. Yeah. sure. Thank you, Okay. Girijat. Yeah. Thank you so Now much. that I've come here, India meetings are also taking place, so it is like round the clock. Right, Yeah. right. Yeah. It's tough. Thank you. Thank Yeah. you so much. Take care. Good Thank night. you. Yeah. Yeah. Good night. All right. And before we end this session, two things again. Like I initially said, while we should continue to talk about Lavanya, justice for Lavanya hashtag, we also should start trending justice for Kishan as well. So both of these really need to be talked about. Just Who, bhai? sending, sorry, Who's the second person you said? I will share the link. It's Okay. Kishan from Ahmedabad, who has been killed point blank for sending one message, one meme. And not even a meme, but it's like a kind of a, yeah, you could call it a meme actually. I'll send you the meme Oh. as well. Maybe you should do a separate video around that. For doing that, he was arrested. Yes, he was arrested. He was in jail. He came back home. He was isolated, and he was, he didn't want to go out because he was scared. But one day he just thought, I should just go out and get some fresh air, and he was killed. So for doing one meme or sending one WhatsApp message, let me put it this way. So I'll share that as well. But let's just talk about these two continuously, wherever we can, whenever we can. Anshul Saxena, this is one guy who has been, how can I get Kishan's video? See a guest, you can ping me on Telegram, and it's my name, or Telegram is V stand for justice, or you could also look up with my number, and you can ping me, and I'll send you the video file. And please, guys, Just give me it's a minute. enough. I'm on the call. I will call you back. Hold on. Okay, let me mute him. So let's continue to talk. Let us continue to raise our voice, because end of the day, we have बहुत हो गया यार, ये टॉलरेंस का ये जो है ना, एक कार्ड, enough of this tolerance card. I think it's time now we talk. It's time we really talk. So before I end, let's go around the table. Ayush, कुछ और कहना चाहते हैं? Anything you want to add? इतना कहना चाहूंगा कि ये बंद होना चाहिए, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर चला गया है। आज लावण्य के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो अगर इसको वक्त रहते रोका नहीं गया तो बेकार हो जाएगा। समझ लीजिए एक तरह का कैंसर है ये कन्वर्जन। सही बात, बिल्कुल सही। All right, thank you. All right, Srinivas, please go ahead.
यस वरुण जी, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। डर का माहौल है। सो मेन स्ट्रीम अब मुझे नहीं लगता टिक पाएगी। सो ऑल द यूट्यूबर्स, नॉट ओनली यू, ऑल द यूट्यूबर्स हु आर एक्टिव एंड हु आर डूइंग सेशंस, माय रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, खाली सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए ही नहीं, जितनों को भी इंजस्टिस हुआ है सबके लिए आवाज दें। और अभी खुल के दिख रहा है कि दे आर गेटिंग अफ्रेड, पीपल आर गेटिंग अफ्रेड। अगर अब हमने बॉलीवुड को, आई मीन गटरवुड को हमने हम लोगों ने डरा दिया, इसका मतलब है वी कैन डू एनीथिंग इफ वी आर यूनाइटेड, वी कैन डू एनीथिंग। अगेन आई एम नॉट सेइंग यूनाइटेड मीन्स ऑल शुड कम टुगेदर, वी कैन फाइट इन आवर ओन वेज, हर किसी का अपना रास्ता है। So that is my request, and this movement should not stop for even Sushant Singh Rajput ji, even Lavanya, even Kishan. That's all I would like to say. Thank you so much. Thank you, Srinivas. All right, Anubhav. Even though we will be talking more about other topics as well, but आज इन दो के लिए क्या कहना चाहेंगे? You want to add? I hope you're back. Anubhav, you're mute if you're back. Okay. So Anubhav message करके गए थे कि he is going away. So anyways, next time सही अनुभव, I will definitely we'll continue talking about this, क्योंकि अनुभव भी एक ऐसा वॉरियर है जो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहता है। मैं देख रहा था आज नवीना जी ने भी मुझे एक टॉपिक दे दिया है, और भी लोग हमेशा टॉपिक देते हैं। सो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री इज फेसिंग, चाहे वो हमारी जुडिशियल सिस्टम से हो, चाहे हमारी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी इनजस्टिस से रिलेटेड हो। वी गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग अंडर द रूफ। बट जब कोई ऐसा केस आता है गाइस, थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कल जैसे, हालांकि मैं ये कहूंगा मुझे टारगेट नहीं किया गया था, बट एट द सेम टाइम देयर वर क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ दिस चैनल। ये कोई एक, मैंने हमेशा कहा, नॉट अ ट्रेडिशनल यूट्यूबर, सो फिर भी आई स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग एंड टेकिंग दैट इन स्ट्राइड कि चलो यस, आई एम अ यूट्यूबर नाउ। तो अगर आप इसको अपना चैनल मानते हैं, अपना प्लेटफॉर्म समझते हैं, तो प्लीज गिव मी सजेशंस। आप मेरा मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे। लेट मी नो व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। इट्स नॉट अबाउट मी, व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। सो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग मी कि हाँ वरुण ने आज नहीं किया, वरुण ने ये नहीं किया, वरुण ने वो किया, जैसे कल के लिए था, मुझे जूडी वाज द वन हु मेंशन्ड इन द चैट, एंड आई वाज इन्फॉर्म्ड टुडे कि मुझे कल के सेशन के लिए भी कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं कि आई शोड सर्टेन पिक्चर्स, वेरी सिलेक्टिव पिक्चर्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड ऑफ द डे सब सोशल मीडिया पे है, सब ऑनलाइन है, यू कैन डू द सर्च, यू कैन फाइंड दोज पिक्चर्स। मेरा मकसद एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर एजेंडा को ड्राइव करना नहीं है। मेरा अवेयरनेस का मतलब है, आई रियली जस्ट नीड टू ब्रिंग दैट थिंग आउट टू यू सो दैट यू आर मेड अवेयर। उसके बाद if you can join YouTube, if you can watch this here, you can obviously open up a Google search page and search for yourself and look up information. I will provide information that I think or I have access to. उसके आगे it's up to you as well. So please थोड़ा सा उसमें and this is applicable throughout सारे YouTubers, सारे channels के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर किसी को एक वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी आप दें कि जरूरी नहीं है कि सेम डॉक्यूमेंट, सेम इंफॉर्मेशन हम लोग सर्च करें। कुछ की इन डेप्थ होती है, कुछ की हाई लेवल होती है, सो प्लीज कंसिडर दैट एज अ हम्बल रिक्वेस्ट। डोंट टारगेट पीपल। अगर आपको किसी का चीज अच्छी लग रही है, अप्रिशिएट करें, नहीं अच्छी लग रही तो उसको पिंग करके बताएं कि व्हाट, दिस इज समथिंग। डोंट ट्रोल, डोंट टारगेट पीपल ऑनलाइन। एंड ऑफ द डे हम सब अपना टाइम निकालते हैं। आज मुझे नहीं लगता था 2 घंटे लगाऊंगा, बट 1 hour 55 minutes. So every single session is becoming almost 2.5 again. And this is the valuable time which both of us are investing. So let's all be very sensible around that. But more importantly, to wrap it up, Lavanya के साथ जो हुआ, a 19-year-old girl killed because of maybe conversion, maybe because of a lot of pressure, because she did not want to give in, has to stop. और लवन्यास हमें नहीं चाहिए। जैसे हम सुशांत सिंह राजपूत के मूवमेंट में कहते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मोर सुशांत्स एंड नो मोर दिशास एंड नो मोर जिया खान्स। सेम थिंग, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव
deaths because of this conversion problem. So let's fix the problem. Let's talk to our government. Let's talk to our right people, the elected ones, who are the ones who can make this change, who are the ones who can stop all such kind of things. और जहां तक रही दूसरी बात, the tolerance part, if somebody has committed any kind of mistake, or WhatsApp, social media पे, ट्विटर पे अगर हमसे किसी से भी, मेरे से अगर कुछ हो जाता है, आपसे किसी से कुछ हो जाता है, let's give everybody a chance to explain. Punish them, but don't punish them by taking away their lives. So please, मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि for God's sake, टॉलरेंट होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पर टॉलरेंट सही जगह पे टॉलरेंट हो. जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर यू नीड टू रेज योर वॉइस एंड यू नीड टू स्पीक अप. एक बड़ा स्टैंडर्ड मेरा तकिया कलाम अब बन चुका है, हर किसी को हर जगह. आजकल तो मैं ऑफिस में भी, मुझे लगता है मैं कई बार बोल देता हूँ और बाद में मैं रियलाइज करता हूँ दैट दिस हैज बिकम लाइक माय तकिया कलाम, कि लेट्स कंटिन्यू टू रोर and let's continue to fight for the truth, for the facts, for honesty, and let's quash anything that is wrong, false, चाहे वो narratives हो, चाहे news हो, चाहे वो लोगों की ideology हो. So let's break that out and let's stand together to fight for everybody who has been served injustice. So on that note, thank you so much. Take care. Jai Hind, Jai Bharat. I will see you guys soon again. We'll plan something and we'll talk about an individual topic very soon. Take care and stay safe and stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye.